no VS Code visible to you guys? Okay. Chrome. Fine. ठीक है. So let's see the revision क्योंकि many of you texted me today only that we want the revision of yesterday class. Already you are saying that. Maybe कुछ लोगों के ऊपर से गया. But it's a new thing, so I can understand it will take time. ठीक है. So let's recap your journey. Till now, what have you learned? Till now, before React. You can tell me in the chat. What is the first thing you learned? Not promise and all. Yes. First is your HTML, then CSS, then JS. Correct? These are the things you have learned till now. JS के अंदर some DSA also. That's fine. Correct? जो आपका DOM है वो आपका HTML, CSS और JS में आ जाता है. Correct? HTML, CSS में भी आप DOM यूज कर रहे थे एंड JS में आप बस आप उसको मैनिपुलेट कर पा रहे थे. Correct? Yes, add-on JS is also part of JS only. Correct. So with the help of HTML and CSS, what you were able to do? You are able to manipulate the DOM, not dynamically, but statically you are able to do. Correct? जैसे हमने यहाँ पे बेसिक सा स्ट्रक्चर था, इसमें अगर आप h1 डालते हो, so you will be able to see it on the DOM like this. Correct? And from here only you are able to style it also with the help of style tag. Correct? अब अगर मेरे को h1 का कलर चेंज करना है तो I was able to do it. Correct? Working like this. But similarly, अगर आपको इसको मैनिपुलेट करना है थ्रू द JS, तो आप क्या यूज कर रहे थे? विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग पहले आप इसको कैच करोगे दैट यू वांट टू मैनिपुलेट, देन इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो? h1 डॉट इनर टेक्स्ट, इसको चेंज कर सकते थे. करेक्ट? वी वर एबल टू मैनिपुलेट, ऐसा ना. सिमिलरली अगर इसको स्टाइल भी अगर आपको डायनामिकली करना है, अभी सपोज मेरे पास कोई फ्लैग है, लेट फ्लैग इक्वल टू ट्रू एंड बेस्ड ऑन दिस फ्लैग की वैल्यू I want to manipulate the color of this h1. So what I can do, I can write if else conditions. If flag is true, what I want to change the color of h1. H1 I have already guessed, so h1 dot style dot color. You can say true पे I can see green. Correct? Else flag would be false. तो उसका color red. Correct? So these are some basic stuff that you have learned. Correct? Flag को आप false कर सकते हो. Correct? And इस flag की value भी आप through the DOM manipulate कर सकते हो. How you can do? Let's build a button. These are the basics that we are recapping. Afterwards we will come to React. Correct? So this is a button. इसको आपको कैच करना पड़ेगा. पहले बटन को कैच किया. Now on this button press, I want this flag की value to become the reverse what it was. ठीक है, तो बेसिकली टॉगल बटन बना रहे हैं. Okay, toggle button. So what I need to do? I want to have an event. Correct. The pressing of this button is an event only. So button पे what we will do? We will have an event listener. So btn dot add event listener. Event is click, and on this click I want to reverse the flag position. If it was true, it will become false. If it is false, it will become true. So initialize the false here only. But when I refresh the page, initially my flag was false and if else condition hit it. ऐसा ना?
Now when I press the toggle, the flag value will change, but will this color change? You can see it is not changing, but I want this to be changed. What is the thing that we need to do? Tell me, guys. Not async. Async की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. I want my color of this heading to be changed after this toggle. After pressing this toggle. Correct. So basically जब भी आपका पेज लोड हुआ तो the all the script already get in the running phase. Correct. तो इनिशियली जो भी फ्लैग की वैल्यू थी उसके बेस पे वो ट्रिगर हो गया. करेक्ट, आइदर ग्रीन और रेड. बट व्हेन आई एम चेंजिंग दिस फ्लैग की वैल्यू ऑन दिस बटन, विल दिस will that impact my if else condition? ये तो ऑलरेडी रन हो चुका है ना. करेक्ट. सो अगर आपको इसको दोबारा रन कराना है आफ्टर द इवेंट तो उसको हमें इवेंट के अंदर डालना पड़ेगा. वर्क्स. नाउ इट विल गेट चेंज आफ्टर ईच क्लिक. करेक्ट. वर्क्स इजी. फंडामेंटल्स. Okay, someone is saying why we are needing it here also. So if you are not having it here, what will happen? At the first time, it will not get triggered. Correct? क्योंकि if else condition will only get triggered after the button click. Correct? It will remain same, but it will run after I click it. Fine? Then आप लोगों ने asynchronous function देखा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम? सपोज मेरे को टॉगल करने की जरूरत नहीं है अभी. ओके, आफ्टर ईच सेकेंड दिस कलर शुड बी चेंजिंग. व्हाट कैन आई डू? करेक्ट. सेट इंटरवल. सेट इंटरवल में कहाँ पे लगाऊंगा? दैट विल सी ज्योति आफ्टरवर्ड्स. ओके. सो दिस इज अ फंक्शन इफ यू सी. कॉल बैक फंक्शन. ऐसा ना. करेक्ट. दिस इवेंट लिसनर वी आर कॉलिंग विथ टू पैरामीटर्स. वन इज द इवेंट एंड सेकेंड इज द फंक्शन. सो जो कोड मैंने इसके अंदर लिखा है, कैन आई हैव इनसाइड अनदर फंक्शन? फंक्शन टोगल. Is it a same thing? And I can have toggle here. Yes or no? Same thing. That was also a function. This is also a function. And it is working also. Correct. Why we have done it? Because we need to have a set interval now. So set interval हम लगाते हैं. अगर set interval पे हमें toggle को call करना है and after 1000 milliseconds. Can you see after each second is changing now? Correct. We can make it any value. Suppose 200 milliseconds. Works. But if we are not having this, how we will call this callback function? Correct. That's why we have made another function. Till now, if everything clear, write one in the chat, otherwise zero. Let's see. We have summarized all the things that you have done till now. There are many things remaining like promise and all, but we will cover that. We have already done this. Correct. How we can manipulate our DOM through our JS, that should be clear till now. Fine. Okay. So let's open it in live server.
ओके, सो अभी हमने क्या किया था कि H1 को और बटन को वी हैव बिल्ट यूजिंग आर simple HTML code, okay, through the body only, correct, without using script. But can we make this H1 and button through script also? Yes, correct. How would we do? We will create directly like this. If H1 equal to document dot not query selector, what we will use? Document dot create element, and what I want is H1. Okay. So एक कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से डिवीजन रूट, H1 बना लिया हमने, और एक बटन, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन। अभी हमें इसे गेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर ऑलरेडी हैविंग इट, करेक्ट। बाकी ऑल द कोड इज सेम। ओके, नाउ विल माय H1 एंड बटन वुड बी देयर ऑन माय इन माय div? नो। व्हाई नो? क्योंकि वी हैव जस्ट created them, we have not told our script to append it in our HTML, correct? Button is not defined. Okay, इसको btn ले लेते हैं। Okay, now where we need to append it? In our root. So what I can do, I can catch the root first और उसके अंदर append कर देंगे H1 और button. Now would my code be working? It should work, no? बटन के अंदर का टेक्स्ट नहीं है बस, बाकी कोड तो वर्क कर रहा है ना। ओके, सो अभी तक क्या हो रहा था कि ये प्रोसेस was becoming very lengthy by just using vanilla JS. You all know the term vanilla JS? What is vanilla JS? Correct. It means normal JavaScript, basic. Okay, pure JS. So ये कोड लिखने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें जब आप बेसिकली कोई भी कार्ड्स बना रहे हो, ग्रिड बना रहे हो, उसके लिए आपको इन द फोर ईच लूप में ये सारे एलिमेंट्स को बनाना पड़ता है, उन सबको एट्रीब्यूट देना पड़ता है, उन सबको स्टाइलिंग देनी पड़ती है, करेक्ट। ऑल द थिंग्स वी आर डूइंग मैनुअली थ्रू है, करेक्ट, मैनुअली, और यू कैन से मैनुअली हमें रिएक्ट में भी करना पड़ेगा, बट द सिंटेक्स वुड बिकम अ मच स्मॉलर, करेक्ट। सो हियर कम्स रिएक्ट। अभी हमने जे से देख लिया, करेक्ट। नाउ रिएक्ट कम्स and it makes these things pretty easier for the developers, okay? So but react को यूज करने के लिए we have to import it, correct? So अभी आपने देखो ये डॉक्यूमेंट का यूज किया, करेक्ट। क्यों यूज कर पा रहे हो? क्योंकि वो आपके डॉम के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कल नूरी सर ने भी दिखाया होगा आपको, कैन यू सी? इट इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर द डॉम डॉक्यूमेंट, जहां से आप सारे मेथड्स एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। बट इज देयर एनीथिंग लाइक रिएक्ट टिल नाउ? नो। सो वी हैव टू import it using our script. So उसके लिए you can go to React CDN links, वो आप उठा सकते हो वहां से। अभी हम यहाँ से कर रहे हैं, बट आफ्टर 1 or 2 classes you will not be you will not be able to copy paste this. We will directly import our React. Okay, so इसको आप अपनी मेन स्क्रिप्ट यूज करने से पहले कभी भी इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्टेड। ओके, दीज आर द CDN लिंक्स। अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करोगे तो यू विल बी गेटिंग सम कोड। कैन यू सी द कोड? वेरी कॉम्प्लेक्स। Correct. So this is the code written by the Facebook developers. If you know, React is a library built by Facebook.
ओके, यू कैन से मेटा। सो ये सारे हमें उठा के लाने हैं। एंड नाउ लेट्स रिफ्रेश इट एंड लेट्स सी वेदर वी आर हैविंग द रिएक्ट नाउ। कैन यू सी हियर? Now we are having React and React DOM in our application that we can use in RFair now. Fine. This is how we will add the React libraries in our web page. Okay. ठीक है. Now what we will do, instead of creating this with the help of Vanilla.js, we will create our H1 and button. Someone is saying what is cross origin. Have you seen this word cross origin in the script when we are importing it? Yes, guys. So the way we are using it, can you say this is a attribute we are providing to a script? Yes or no? If we are using div like this, so in place of div, we are having script. And what do we call this ID? Is it an attribute or not? Similarly, this cross origin is an attribute for script. Okay. And why we are using it? That's a good question. It is used to control how the browser handles your cross origin request. ओके, सो प्रीवियसली आप क्या कर रहे थे कि आप पाथ यहाँ पे दे रहे थे अपना लोकल पाथ ऑफ जेएस, करेक्ट? सो आपके जो जेएस है उसको किसी और साइट या सर्वर पे जाके कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा था, ऐसा ना? बट नाउ यू आर हैविंग अ site altogether, or you can say the library from where you are importing your codes. Correct, we are importing and using. So आपका ब्राउजर उस चीज को रिस्ट्रिक्ट ना करे उसके लिए हम ब्राउजर को पहले ही बता रहे हैं कि दिस सोर्स दैट वी आर यूजिंग आर हैविंग सम लिंक्स दैट प्लीज अलाउ इट. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग क्रॉस ओरिजिन. ओके, ब्राउजर को बस ये कहने का तरीका है कि प्लीज अलाउ दिस एक्सटर्नल स्क्रिप्ट. ओके, गॉट इट गाइस? अभिजीत? हाँ, यू माइट गेट सम एरर इफ यू आर नॉट यूजिंग क्रॉस ओरिजिन. वो एरर भी क्या टाइप करेगा कि आपका ब्राउजर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बस. इफ मैंने अनेबल कर रखे ब्राउजर में तो मेरे को नहीं दिखाएगा, बट फॉर नाउ इट इज नॉट गिविंग एनी एरर्स. बट व्हेन वी यूज इट, लेट्स सी आर वी गेटिंग एनी एरर्स और नॉट. ओके, अभी हमने यूज नहीं किया इसलिए एरर नहीं दे रहा हूँ, करेक्ट? जो कुछ भी हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट दिस h1. Do you know the syntax, guys? How you can create this h1 using the React? Okay, tell me. करेक्ट. सो उसको भी हमें स्टोर करना पड़ेगा. लेट से योर h1 इक्वल टू react डॉट क्रिएट एलिमेंट, जैसे हम डॉक्यूमेंट से कर रहे थे. क्रिएट एलिमेंट एंड इट टेक्स 3 पैरामीटर्स. कैन यू नेम द फर्स्ट पैरामीटर? करेक्ट, it is the tag name that you want to create. Second is props. What do we call props? Props is a fancy word of having attributes, correct? It can be id, it can be classes, it can be style, correct? Then the third comes hello world, which is a children or the inner content of your h1, correct? And this hello world you can pass through props also with the keyword children, correct? Okay, I have created my, let's remove all these things for now. I have created my h1. Will it be visible? Why? क्योंकि जैसे हम डॉक्यूमेंट में हमें अपेंड करना पड़ रहा था, here also we have to append this h1 in our root.
उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैच आर रूट. करेक्ट. So let root element equal to document.getElement by id root. Correct. Why do we, if we do not need props, pass null? That's it. Okay. What you will pass in this second parameter is an object. Okay. इन उस ऑब्जेक्ट में आप कितने भी आपके एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स. बट इफ यू डोंट वांट एनीथिंग जस्ट पास null. आप उसको स्किप नहीं कर सकते बट. ओके. Now I have the root element, I have the h1. Now can I do root element dot append? Will it work? It is not working. It is working, but for this root element, which is a basically JS का element है जो, उसके लिए ये h1 is an object. अगर आप h1 को print भी करना चाहोगे तो you will not get it. You will get it as an object. See clearly. Can you see? क्योंकि it is coming through React library. React से बन के वो आपके पास आ रहा है. करेक्ट. सो वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा. करेक्ट. तो अपेंड वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट. क्योंकि उसको वही पता है उसके बारे में. सो इस h1 को to convert or to tell the DOM that how this h1 should be looking, we will use render. Okay. तो backend में वो processing चलेगी and this h1 will get displayed on your root element dot render is not a function. What we are missing? What we are missing? React DOM. Where should we use React DOM? Okay. एक्सेस रूट बाय रिएक्ट डॉम. करेक्ट. सो अगर आप देखोगे हमने स्क्रिप्ट में दो चीजें इंपोर्ट करी हैं. कैन यू सी हियर? द फर्स्ट वन इज अ रिएक्ट. ओनली रिएक्ट. जिसकी हेल्प से यू कैन क्रिएट एलिमेंट, यू कैन बेसिकली अपडेट क्रिएट एंड ऑल. जो भी आप जेएस में कर रहे थे वो कर पा रहे थे. करेक्ट. बट टू मेक इट टॉकेटिव टू योर डॉम, उसके लिए वी हैव सेपरेट लाइब्रेरी ऑल टुगेदर विच इज रिएक्ट डॉम. आर वी यूजिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट रिएक्ट डॉम? We have got our React, we have got our root element, but that we have got directly through JavaScript, not through React DOM. Correct. So React DOM को हमें बनाना पड़ेगा. How we can make it? Root element equal to जो root है उसको हमें देना पड़ेगा यहाँ पे. Correct. Either you can do it in this manner or you can do it in basically इसको हम directly copy paste करके in the root डाल सकते हो. Correct. Same thing. Clear guys? And this render is a function of root element, not root. Correct. क्योंकि root is nowhere related to any React thing. Correct. This root we need to convert into React DOM, and on that you can have this render. Will it work now? See? Got it guys? This is the pretty basic thing of React.
Correct, Harshit. React DOM, you can say, is a bridge. Okay, one more thing that I need to tell you is this is not directly manipulating your DOM. What it is manipulating? Now this React will be having its virtual DOM. Correct. You can say React DOM that is created by React. And on each step, what it will do, suppose you are having a very big page. Okay. So पूरे पेज को बार बार रेंडर करना इट्स नॉट अ गुड वे. करेक्ट. सो रिएक्ट क्या मेक श्योर करेगा कि the things that you are updating in your page that should only get re-rendered, nothing else. Correct. So उस way में your application will become much faster. Got it, guys? Okay. If everything clear till now, please type one in the chat, otherwise zero. Let's see. Okay. Okay. Now let's say we are having another H2 say. This is H2. So what should I do? What will be displayed on my DOM? Someone is saying use comma H2. Will it work? Is it working? What it is saying is there you can only pass one parameter or you can say one argument in the React render. Correct? So what is the way to do it now? What you need to do is you need to wrap all the things that you want to show in your DOM inside one division or you can say fragment. Correct? So what we can do, we can just create our div equal to react dot create element div, and what we need to pass as the third parameter क्योंकि मेरे को इस div के अंदर ये h1 h2 दोनों चाहिए. What I can do, either we can have it copy pasted there like this. Yes or no? Then I just need to render what? Our division. Will it work? No. H1 is not defined. Okay. Correct. So your root element, or you can say root, can only render one element at a time. Correct. Another way is we have done so much things, but can't we use it again to render? Will it work like this? Yes, no. How many of think it will work? Never tried before. It will work, but what is the thing you are getting? Last one. So the last thing your React root will render will be replaced by the last element that you are rendering. Got it? क्योंकि React follows SPA. You know what is SPA?
single page applications. Correct. So whatever you will do any changes in your DOM will be under this root only. Yes or no? So whenever anything changes in your React, your whole page will not get reloaded. Only the particular part that you are changing will get re-rendered. Okay, in your application. So if you still want to do it like this manner, what you can do, you can create another route. करेक्ट, एंड इसको हम कैच कर लेते हैं. और इसका भी रूट एलिमेंट बना लेंगे एक. करेक्ट. नाउ उस एलिमेंट में यू कैन हैव इट. नाउ इट विल नॉट गेट रिप्लेस्ड क्योंकि दीज बोथ आर डिफरेंट रूट एलिमेंट्स. करेक्ट. वर्क्स. बट यूजुअली वी डोंट फॉलो दिस स्ट्रक्चर. हमारे एक पेज में एक ही रूट एलिमेंट होता है जिसको हम टारगेट करते हैं. ओके, क्योंकि वी हैव टू फॉलो आवर एसपीए. फाइन. यू कैन हैव मल्टीपल पेजेस बट एक पेज के अंदर वी should only have one root. Okay, ideally, if you want, you can create just as we did. Fine. Hmm. Okay, create rate we have done, dot render we have done. Okay, now comes the third problem. जैसे हम वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे अपना h1 h2 और डिवीजन where in our document dot create element. Here also we need to more or less following the same structure. Yes or no? So is there any way to directly write HTML through our JS? What do we call it? We call it JSX. Okay, which is JavaScript XML. So it will be HTML like code. It will not be HTML code. Okay, you have to make sure that it will be HTML like code, similar to HTML. It will not be HTML code. Okay, we will see. Okay. So how we can do that? Can we write this H1 as this thing? Will it render now? Will it get rendered? No, क्योंकि it will assume that this is your JS file. Yes or no? So this language, your browser ka compiler will not be able to understand. So how to make it understand? So उसके लिए we need to use a tool which is Babel. Okay. And उस Babel का आपको CDN भी drop करना पड़ेगा. Babel CDN link. So this is our Babel. Import कर लेंगे, but still will it be able to understand? Will my browser will be able to understand it? No, क्योंकि in the script we need to tell it what is the type that we are having in our script. So what is the type? Type is text slash Babel. Are you having any issues now? Working fine? We are able to use it. Similarly, you can have our this element also. Works? Correct.
अभी अगर अगर आपको इसको क्लास देनी है तो व्हाट यू विल राइट, आईडी दे सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज। सपोज आईडी हेडिंग, आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ इट थ्रू माय स्टाइल टैग, विल आई एबल टू डू दिस? वर्किंग, इजी। बट अगर मेरे को इसको क्लास देनी से क्लास, और फॉर द क्लास व्हाट वी यूज, डॉट, विल इट वर्क नाउ? इफ yes why, if no why? You see a warning here, it is changing but it is giving you a warning. Correct, it was smart enough to change it to class name. Okay, so ideally it should be class name. Why? That's why I've told you it is not HTML code, it is HTML like code. You can say it is a JSX currently. Correct. Got it, guys? Okay, let's remove this root to, correct the whole code. You can run in a simple div also. So जैसे वहाँ पे create करते थे, let div equal to, कोई div है? Okay, so let's have the source only. Now why we are using it, let's see. So अगर मैं इसको source भी दे देता हूँ src equal to abc.js. First of all, let's see whether it is working or not. अरे यार कॉपी कर लेना चाहिए, wait. Okay. अभी आप देखोगे अगर, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी सजेशंस एंड ऑल, करेक्ट? So firstly, if we are having JSX, so let's rename it to JSX only. Afterwards, you might have the session. Can you see the logo change? Correct. So इसको भी JSX कर दे. Now let's try to write it again. Let root element equal to. Can you see the suggestions now? React and React DOM wale. So that's how you will be able to get it. React DOM dot create root element and pass the root. Now let's have a division. Let div equal to. Can you see? We are getting the HTML session also now. Division, let's say division के अंदर we are h1. think I need a restart. ठीक, now I want to just render this. Root element dot render division. Working fine. Okay. So now let's say you are having multiple divs. Let's copy this and paste it here. Div 2 it is. What should we do now? I want to render both these divs.
Comma we cannot use. We will not create another root element. What should we do now? Wrap it. How to wrap? How to wrap our both these divs? एक और चीज देखी होगी आपने कि this round brackets, are you able to see? If we are having multiple lines, we have to wrap inside the round brackets here. Otherwise, it will not work. Okay, fine. Okay, most of you are saying like this. Let main equal to कोई तो फ्रेगमेंट है और इसके अंदर we will write both these codes. ऐसा? Works? Okay, this is one way. Another way is we can make the component. Now, what is component? Component is nothing but a function only. But certain properties are there. The first alphabet of any component should be capital, and you can pass props also. Correct. Now, what this component will return us is this code. Correct. We have written the code inside our main, but we have to return it. Works. Now, again for return, we have to wrap this inside the round brackets. Okay. Keep remembering this. Now, will it load? If I do like this, will it render it? It will not. Because now we are not having any element. We are having a component. So this component should be called in such a manner. Either you can call it like this, like a function. What is the secondary manner? As a element. Okay. Self-closing element. Works. Okay. And through here, you can pass the props. Okay. So let's say you are having an object. What is props? Object only? Yes or no? Name one, let's say Rahul, and name two, the same. Okay. Now I want to use this object as a prop. So how we can pass it? Can I pass obj like this? Brackets. Okay. obj pass कर दिया. It's not working. How I can use it? Will it work? Props. लेट्स से जब भी ये चल रहा है तो आपका मैं कंसोल करके देख लेता हूँ.
console.log props. Will it work? What we are having? Object only. Correct. So what you guys need to do is, अगर आपको नॉर्मली इसको पास करना होता है जैसे आपने कल देखा है, तो आप क्या कर सकते हैं? नेम एस राहुल. Can you pass it like this as an attributes? It is the error we are having. In the brackets. Okay. No. Let's a name one. If I call here props dot name one, will I get Rahul? No. What is the issue? Okay. Now is it fine? Now remove brackets also. Works. Will it work now? So this syntactical issues you need to solve. Okay. Initially. क्योंकि बाद में when your code becomes bigger, it will be very hard to decode it. Okay. So जैसे मैंने name one में राहुल पास किया. Can I pass this OBJ as well? Yes or no? OBJ is a JS code, so we can pass it like this. Works. Now what does this name one contain? Let's इसको prop ही बोलते हैं. What does props contain? It will contain the object, full object. If I want to call it, what I'm having? Undefined. क्योंकि this props only is an object. Yes or no? Okay, let's have a different name. Say ABC. Okay. Now, if I run it again, what do we have? ABC as an object. Same thing. Yes or no? Just the name is different. क्योंकि हमें हमने ऑब्जेक्ट ही पास किया पूरा. Correct. ABC have become an object only. Yes or no? So what if I want to call this name one? Can I do props dot name one? Will it work? Just you have seen. Will I be having this name one in my object? No. See it again. When I'm calling this props, what I'm getting? ABC I'm getting. So don't you think I need to use ABC पहले? The object का नाम. Now I'll be having the access of name one. Getting it or not?
Correct. You can have this props as spread operator as well. Okay. So suppose आपको डायरेक्टली ही यहाँ से निकालना है कि लेट्स से यहाँ पे अपने पास किया एक ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में जो भी था वो चला जाएगा. ओके. सो हेयर वी कैन हैव द destructured version of it. Dot 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 props. Now what do we have in this props? Anyone? Even this? Let's see. Or do we have undefined? ABC only? Yes or no? So इसने क्या किया, इसको destructure किया खाली. Okay. It will having an object only. Okay. Let me clarify it for you. Let's say we are having an object 2 as well. This might be confusing and we will left it confused only. Now, can I pass another prop as well? Prop 2 is equal to obj2. Yes or no? First, we will see what we are getting when we are not using that. What we are getting? An object जिसके अंदर ABC नाम की एक ही की है. Yes or no? Yes. Now, what if I do ABC2 इसके ABC2 डालूं. Now, what we have is two keys altogether. Yes or no? एक ही साथ डिस्ट्रक्चर होके आपके पास आ जाएंगे. Correct. That might be not working for you. What I'll be getting now? Am I getting the same thing only? Okay, let's not go into destructuring as of now. ठीक है. But props pass करना आ गया आपको. We can pass objects as a prop and we can use it inside the component also with the help of curly braces. Spread operator will be done in the next class. कल होगी आपकी. If till now, if you got 80% of the concepts also, it is more than enough. Any doubts किसी को? How we can do certain things or not? You can unmute yourself. You will see. सर मुझे डाउट था असाइनमेंट में जो सेकंड वाला था. Assignment में यस सर. this one. हाँ सर, सेकंड वाला असाइनमेंट. सर इसमें 2 अलग-अलग पैराग्राफ बनाने हैं, फिर उन्हें कंडीशन के अकॉर्डिंग अपेंड करना है. सर कैसे Okay, let's बता see. सकते हैं? In this assignment, you will explore the power of JSX Babel, allows you to HTML-like syntax, HTML-like syntax with JavaScript, making your development process more efficient. Babel, ठीक है. Task overview क्या है आपका? Your main task is to create paragraph element using JSX. ठीक है. जिसके अंदर ये टेक्स्ट दिखेगा. The exercise will be divided into 3 levels: basic, internal, advanced, each requiring different complexities.
ठीक है, बेसिक्स में क्या है, आपको सिंपल जेएसएक्स एलिमेंट बनाना है, एक पैराग्राफ जिसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा होगा, एज अ चिल्ड्रन आप पास कर सकते हो, करेक्ट। रिक्वायरमेंट क्या है, बॉयलर प्लेट आपको ऑलरेडी गिवन है नीचे, इनसाइड द स्क्रिप्ट यू जस्ट नीड टू क्रिएट द p टैग एंड उसको div में आपको रेंडर कराना है। ठीक है, इंटरमीडिएट में ऊपर वाले में इशू है बेसिक में। नहीं सर, ये एडवांस जो था या इंटरमीडिएट कुछ ठीक ऐसे है, ही। इंटरमीडिएट में देखते हैं डायनामिक कंटेंट इन JSX। इस केस में आपको क्या करना है, एनहेंस द पैराग्राफ एलिमेंट टू इंक्लूड डायनामिक कंटेंट, रिक्वायरमेंट इज डिफाइन अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल दैट होल्ड्स अ स्ट्रिंग। एक p बनाया आपने बेसिकली, और उसके अंदर सीज ऑफ द डे डाला, सीज द डे। हाँ सर, ये कर Now, दिया एडवांस same में variable. इशुएशन। Okay. Okay. Use this variable within the JSX to set the content of the paragraph. Okay. Paragraph is still rendered div root. ठीक है, इसमें क्या किया आपने बताओ। सर इसमें मैंने फ्रैग बनाया है एक। फ्रैगमेंट। नहीं नहीं, इसे मतलब मैंने नॉर्मली रेंडर कर दिया एक ओके। पैराग्राफ में टेम्पलेट का यूज करके, जो कंपोनेंट का यूज करके करते। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। सर ये तो मैंने नॉर्मल वेरिएबल बनाया str1, जिसमें मैंने ये टेक्स्ट लिख डॉक्यूमेंट से दिया बनाया, इज रिएक्ट ऑफ से। द। हाँ सर, हाँ रिएक्ट से ही उसमें रेंडर किया है। सर स्क्रीन शेयर करूँ? नहीं, नो इश्यूज। ठीक है, आपने ओके। रेंडर कर दिया, यूज दिस वेरिएबल विद इन योर JSX टू सेट द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। सेट कर सकते हो बाद में, ठीक है। हाँ सर, एडवांस में ये जो लाइन है ना कि इफ द वेरिएबल इज ट्रू डिस्प्ले अ पैराग्राफ विद द टेक्स्ट दिस, इफ अ वेरिएबल इज ओके। फॉल्स डिस्प्ले। हाँ, इन ठीक है। एंश्योर द करेक्ट पैराग्राफ इज रेंडर, मीन्स दो ठीक। पैराग्राफ बनाने हैं इसमें और उन्हें आईडी के अकॉर्डिंग रेंडर करना है, ओके, या लेट्स सी। फिर नॉर्मली फ्लैग से करते हैं जैसे कि। ठीक है, एक फ्लैग बनाया आपने, ट्रू और फॉल्स। हाँ सर। यूज दिस वेरिएबल टू रेंडर वन ऑफ द टू पैराग्राफ। सो आपके पास अगर फ्लैग ट्रू है तो p का जो इनर कंटेंट है वो सीज ऑफ द डे होगा। अगर मीन्स वो एक ही फॉल्स है, पैराग्राफ में। हाँ एक ही पैराग्राफ होगा डायनेमिक। ओके, तो उसी में ही बस टेक्स्ट हमें हाँ, वो करना उसी है। का टेक्स्ट चेंज करना है बस। ओके। और सर इसमें ये तीन तरीके से करके दिखाना है, या हाँ, एक तीनों ही से करना है आप, एडवांस लेवल तीनों का से करना है, ये? तीनों से करना है। ओके, तो एक ही तो आप आईडी क्या कर सकते बार हो, बार यूज करना है? आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका इंटरमीडिएट हो जाए, वर्क कर रहा है, तो उसको कमेंट कर दो, फिर ये वाला करके कमेंट कर दो जो आपका बिगिनर लेवल था। कितने लेवल है इसमें, 3 लेवल है ना। हाँ सो सर। दो को कमेंट कर दो और एडवांस को अनकमेंटेड रहने दो। ओके करके, और वहां पे ओके डिफाइन कर सर। दो कि दिस इज दैट लेवल। ओके सर, थैंक यू सर। और सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि मुझे रिएक्ट के थ्रू इसे एक टू अपर केस करना हो, ये जो पैराग्राफ की स्ट्रिंग है, तो सर वो कैसे करूँ मैं? मैंने वो तो टू अपर सिंपल केस जेएस है करके ना, देखा। वो तो जेएस तो आप यूज ही कर सकते हो। सर मैंने यूज करके देखा पर रिएक्ट में नहीं हो पा रहा है, जो मैं कंपोनेंट के अंदर कर रही हूँ ना काम, हम्म। उसमें उसमें बहुत ओके। सारी इशू आ जा रही है जो रिएक्ट में आते हैं। ठीक है, तो आप आप क्या करके करने दिखा का सकते ट्राई हैं? कर रहे हो जैसे कि H1 है, इसमें H1 का हेलो जो है मुझे वो अपर केस में चाहिए। लेट h1 इक्वल टू, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं h1 और हेलो, ऐसा। हाँ सर, इसे अब मेरे को अपर केस में चाहिए रिएक्ट के थ्रू। ठीक है, व्हाट इज द इशू इट इज हैविंग, क्लोजिंग टैग। Okay. Now you want to convert this H1 का inner content into, टू अपर केस। okay. So first of all आपको इसका inner content पकड़ना आना चाहिए, करेक्ट। हाँ सर, सो मैंने इसके सेम क्रास है वो, सेम है वो क्रास H1 से होगा। डॉट इनर टेक्स्ट। नहीं नहीं सर, मुझे यहाँ पे यूज नहीं करना, इसे फंक्शन के अंदर यूज करना था।
फंक्शन H1 को। से आपको H1 को चेंज करके, हाँ, उसकी क्लास के थ्रू। H1 को मैंने कोई क्लास दे दी लाइन नंबर 3 पे। अब उसे क्लास के थ्रू मेरे को कैच करना है, फिर करना है। सर क्लास हाउ यू नेम वांट, पूरा लिखना होगा या नॉर्मल क्लास से लिखना होगा? नहीं नॉर्मल क्लास नहीं चलेगा। ओके, ये शायद मेरे में इशू इसी वजह से आ रहा हो। तो इस फंक्शन के अंदर यू कैन कैच दिस H1। हाँ सर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, फिर उसमें हेड वन जैसे करती डॉट डॉक्यूमेंट करके। डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हाँ सर। दिस इज अ रिएक्ट एलिमेंट और डॉक्यूमेंट एलिमेंट। सर सर रिएक्ट में भी, अच्छा रिएक्ट में रूट के थ्रू कैच करते होंगे। वाई यू नीड टू कैच इट, आपका H1 बना हुआ है पहले से। नहीं सर, मुझे इसे अपर केस में करना है हेरो को, तो बट मैं कैसे H1 करूँ तो आपके फंक्शन पास के बना थ्रू? हुआ है, तो H1 डॉट इनर टेक्स्ट कैन वी यूज इट हाँ सर, यूज तो कर सकते हैं। इक्वल टू H1 dot inner text, you can have it in the brackets, ये स्ट्रिंग होगी एक, हाँ सर, इसे डॉट टू, डॉट टू अपर केस। will this not work? Let's console सर it, कॉल कर दे इसको and return this H1 only, correct? हाँ सर। Return this H1, H1 is an element, so अब यहाँ पे क्या कॉल करूंगा मैं, हेडिंग को, सुनो। हाँ सर, पर मेरा डाउट ये था कि अगर मैंने एक फंक्शन में H1 बनाया, दूसरे फंक्शन में उसी को मेरे को चेंज करना है जाके क्लास के थ्रू, तो मैं कैसे करूँ उसे अपर केस में? फंक्शन होगा, ये कंपोनेंट है, हाँ, मीन्स still कंपोनेंट having में। errors, हाँ सर, ऐसी एरर आ रही थी मेरे में भी। cannot be the properties of undefined, और जब आप यूज कर रहे हो टू अपर केस, करेक्ट। यस सर। सो इसमें इशू क्या हो रहा है कि दिस टू अपर केस इज अ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। जावास्क्रिप्ट कोड, तो करेक्ट, सर इट इज अ रिएक्ट मेथड। के लिए कैसे करेंगे? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक। ओके।
Okay, I have to go through it. I was on mute, sorry. ठीक है, मेरे को भी देखना पड़ेगा यार एक बार वो. ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? कुछ तो हम सिली मिस कर रहे हैं और ज़्यादा और कुछ नहीं है. और सर एक और चीज पूछनी थी, ओके, जैसे कि जो। लेट्स यूज जीपीटी. मैं जीपीटी यूज करके बताता हूँ आपको अभी. ओके। वन सेकंड, जस्ट गिव मी वन वन मिनट. Why I'm getting undefined and consoling txt. करेक्ट, इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी डायरेक्टली वर्क तो नहीं करेगी. This code, what is different in this? ओके, जीपीटी को भी दोबारा ही पूछना पड़ेगा. ठीक है, इसको देखते हैं फिर बाद में. ओके, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना मेरे को, ठीक है? ओके सर। और सर जैसे कि हमारी जो मसाई के पोर्टल पे असाइनमेंट अपलोड होते हैं, तो उसमें ये भी लिखा होता है रेस इवेल्युएशन टिकट स्कोर। तो सर स्कोर करने के लिए कुछ टिकट रेस करनी होगी क्या? स्कोर क्या करना है आपको? सर जैसे कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करके 1 मिनट पूछूं, दिखाऊं? हाँ, बताओ बताओ. इनेबल कीजिए। Guys, if you're not having doubts, you can drop out, guys. That's all we have to do in this session. सर जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रेस इवेल्युएशन स्कोर टिकट, तो इसके लिए नहीं नहीं, वो मतलब इनसे किस लिए? दिस इज असाइनमेंट. ये हर पेज पे आ रहा है क्या आपका? हाँ सर, असाइनमेंट के पेज पे आ रहे हैं, जैसे ये असाइनमेंट पे, ये हर एक असाइनमेंट पे शो हो नहीं रहा नहीं है। नहीं, वो कंपलसरी नहीं है. वो बेसिकली वो टिकट रेज करने के लिए, इफ यू आर गेटिंग लेस मार्क्स इन द इवैल्यूएशन देन सर यू ये एक्सपेक्टेड. मीन्स ये जो सी मतलब सीपी पे जो इवैल्यूएशन होता है उसके लिए, हाँ, या उसके इन लिए. असाइनमेंटों के लिए? असाइनमेंट्स के लिए नहीं है. ओके सर। सर यही डाउट था। ठीक है. थैंक यू सर।